few words. Just now I'm wearing the hat of PBR CEO. Of course, and that is why you are multifaceted. I have to wear clothes like this, huh? You are definitely multifaceted. Okay, after the Q&A, I'll sing some. Is that okay? Yeah. Ayushman, but we can't spare you. And I've heard a lot of your songs. मतलब on air or off air भी. नहीं, आज तो गाना है ही. But we want to know something about the filming and the making of the song Dil Ka Telephone that was just launched. Yes. Dil Ka Telephone 2.0, of course, is the newer avatar of the Dil Ka Telephone original song that we did. So it had a certain recall. Since in the first movie I was just playing with my voice, अपनी आवाज के साथ खेल रहा था. इसमें सिर्फ आवाज नहीं, पूरा अंदाज ही change हो गया. So that's why we had to keep this song. For that, there was there's a good memory of this song. So उसकी एक recollection है फिल्म के अंदर. That's why it's there. Thank you. We open the floor for Q&As now. Please give me the mic. Mic. देना. नहीं सर, माइक. आप नई इनोवेशन में लाए हैं. एक बहुत लंबे टाइम फिल्मों का और क्रेज रहा है, और एक अब आपके साथ दूसरी पीढ़ी भी आपकी जुड़ गई. लेकिन जब वो एक 40 mm का स्क्रीन होती थी, उसके बाद 75 mm आई, अब बिग स्क्रीन आ गई है. म्यूजिक भी चेंज होते चले जाते हैं. तो इस दौरान जो सफ़र है आपका स्क्रीन को लेकर कैसा रहा है? जो स्क्रीन की बात आपने अभी करी, म्यूजिक की बात करी, तो कैसा रहता है सब 40 mm से लेकर 75 और अब बिग स्क्रीन? सिनेमा का जो शुरू से चार्म है वो तो बिग स्क्रीन और बड़े साउंड का ही है. पर जो टेक्नोलॉजिकल फिटर्निटी है, चाहे वो क्रिस्टी प्रोजेक्टर वाले हैं, चाहे डॉल्बी हैं, चाहे आईमैक्स हैं, वो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटली इम्प्रूव करते रहते हैं. और फिल्म फिटर्निटी जैसे आयुष्मान, ये भी मूवी का एक्सपीरियंस इतना अच्छी तरीके से प्रोडक्शन वैल्यूज करते हैं ताकि वो ज़्यादा इन्हांस हो जाए. तो हमारा तो काम यही है कि फिल्म मेकर्स को और फिल्म गोअर्स को जोड़ना है, और जो बीच में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, साउंड की, चाहे प्रोजेक्शन की, हमारा सिर्फ यही 33 इयर्स यही एक मकसद रहा है कि हाउ कैन वी मेक दैट एक्सपीरियंस बेटर एंड बेटर, ताकि लोग जब पिक्चर देखने आए, चाहे वो ड्रीम गर्ल 2 का गाना हो या कोई एक्शन सीन जो आपने देखा, उनको लगे वाह ये मैं घर पे नहीं देख सकता. एंड आई एम ग्लैड मैं बाहर आया हूँ और मैंने ये देखा है बाहर, बिकॉज इसके जैसा एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता. तो इसीलिए स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए, और साउंड ऐसा होना चाहिए कि वो आपको मतलब बिल्कुल इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे. तो दैट्स द प्रोजेक्ट. अमित जी, आपने नई चीज़ें आपने देखा अपनी फादर का, और आपने नए अम्ब्रेला के नीचे बहुत सी चीज़ें लाने की कोशिश करी इस बार, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस तो लर्निंग का ही है एक्चुअली. The journey has been great, to be honest, to be able to learn from everyone. I think, as Dad ने बोला, जो production value है movies के बढ़ी रह रहे हैं, it's improving, so we can do our best to make sure that it's witnessed on the biggest screen, best experience possible. बस यही है. हाय आयुष्मान, हाय हेयर इन फ्रंट ऑफ यू. भाई गाना बहुत अच्छा लगा मुझे आपका. सर मैं जानना चाहूँगा कि पार्ट 1 2019 में आई थी और दिल का टेलीफोन उस टाइम बहुत फेमस हुआ था, एंड नाउ 2.0 वर्जन. सो व्हाट ऑल हैज़ बीन चेंज लाइक सिंस देन टिल नाउ व्हाइल द मेकिंग ऑफ दिस सॉन्ग, ये जानना है. और दूसरा, आपने अभी बोला कि लड़की होना बहुत डिफिकल्ट है. सो व्हाइल प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर पूजा, लाइक उसमें आपकी सिर्फ वॉइस थी पार्ट 1 में, इसमें आप पूरे पूजा बने हैं, पूरा आपने ट्रांसफॉर्म किया. क्या डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आपने फेस किया भाई? यार सबसे ज्यादा काम इस पे मेकअप, कॉस्ट्यूम और थोड़ी सी वीएफएक्स का भी. अच्छा. टू बी फ्रैंक, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैज टू बी सर्टेन एम्पैथी. एक फेमिनिन साइड आपकी जो होती है वो आपको जगानी पड़ती है इस फिल्म के लिए. आई वाज वेयरिंग परफ्यूम्स आल्सो, जो लड़कियों की परफ्यूम तो वो लगा के मैं शूट करता था, और अपनी एंट्री के लिए हमेशा एक गाना प्ले करता था, सो दैट आई जस्ट फेमिनिन एनर्जी जागरूक हो और मैं उसको फिर पर्दे पर लेकर आऊँ. Okay. So इतना आसान नहीं है, बट एक चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए. और ये आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू डू दिस. मुझे इंस्पिरेशन मिली है गोविंदा सर से, कमल हासन सर से, जो चाची 420 उन्होंने पहले की थी. सो हर जनरेशन में, हर एरा में एक एक्टर ने ये रोल ऐसा किया है, और मिसेस डाउटफायर जो हॉलीवुड फिल्म है वहां से इंस्पिरेशन मिली. सो आई थिंक इट्स इंस्पायरिंग टू सी दीज एक्टर्स एक्सप्लोर द फेमिनिन साइड एंड कन्विंसिंगली प्ले a female character. कोशिश ये रहेगी इस बार कि मैं बेस्ट एक्ट्रेस जीत सकूं,
ये मेरी इस साल की aspiration। तो मतलब बीच में कभी कुछ ऐसा इरिटेटिंग तो नहीं लगा आपको, या लाइक मेकअप इतना कैरी करना है, सो हम लोग मैंने बोला लड़की बनना बहुत मुश्किल है, लड़की होना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 44 डिग्री सेल्सियस मथुरा की धूप में मैं मेकअप, हेयर और साथ में जो सेट बेल्ट जैसे मैंने बोला, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सर में शेविंग में कितना टाइम लगता था? तो हर 4 घंटे बाद मेरी दाढ़ी आ जाती थी, तो मुझे शेव करनी पड़ती थी बार-बार। इट वाज नॉट इजी, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा वो चेंज वाला बता दीजिए 19 से अब तक। We would also request people sitting at the back and mics can, they can come to you. This is Shark from Music. Hi, Chirag. Like you mentioned about cross-dressing and taking Dream Girl to another level now. Were there also hesitations in the beginning? Hesitation, I think, जब तक आपका ह्यूमर क्लीन है और एक फैमिली ऑडियंस के लिए है और आप किसी को बुरा नहीं कह रहे, तो ये हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। एंड द डे एंटरटेनिंग फिल्म और मासेस के लिए है, इसमें कोई खास मैसेज नहीं है, जस्ट प्योर एंटरटेनमेंट, इट्स जस्ट लाफ आउट लाउड फिल्म, तो ऐसी कोई हेजिटेशन नहीं है। Hi Ayushman. I request the guests to just stay back for 1 or 2 minutes more for a group photograph. Hi Ayushman, this is Shwadzi, right here. Hi. Hi. So my question is, from the boy next door, the Delhi boy next door, having big Bollywood dreams, to being the dream girl of Bollywood, how does it feel to give not only the action heroes competition, but the women contemporaries as well? I think you have to ask this question to Ananya Pandey. No, this is for you. This is for I had a Pooja. tough competition for Ananya Pandey. She's beautiful. She's done a great job in the film, and I'm the second heroine. She never signed up for a 2-heroine film. She always thought it's like a one heroine. But yeah, so I'm the parallel lead in the film as I am as well. It's not just. In fact, I'm 60% of the film I'm playing Pooja, so that's double the fun. And it's tough, of course. As I said, the aspiration is to get nominated in the Best Actress category. Let's see. We're rooting for you. Thank you. Hi Pooja. आप आज पूजा ही लग रहे हैं। आप पूछ नहीं लग रहे हैं। पूजा मेरा आपसे ये सवाल, नॉट सवाल, मेरी एक रिक्वेस्ट है, कन्वर्सेशन मैं चाहता हूँ पूजा से। एक ट्रेलर में थोड़ा सा सीन है, आपके हस्बैंड ने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा है, तो विद पूजा एक्चुअली हस्बैंड नहीं, वो अन्नू कपूर जो है। हाँ, वो आपके हस्बैंड फादर है, पर उनका मैं वाइफ बनने की कोशिश करके उसको जो बिल मांगने के लिए फोन कर रहा है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो एक कन्वर्सेशन आप कन्वर्सेशन कर कीजिए मेरे साथ। हेलो आपके फादर ने 3 महीने से अपना क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भरा है। मैंने 1 हफ्ते से मांग में सिंदूर नहीं भरा है, तो भरा आप बुरा ना माने तो आपके मांग में सिंदूर भर दो। सिंदूर भरने के लिए पूरा मोहल्ला पड़ा है, बिल कौन भरेगा? थैंक यू थैंक यू। So all your fans are waiting for you to see in a negative role, because we have seen your lovely side, we have seen your feminine side as well now, and we are looking forward to all the amazing films you're going to do. But in one of your interviews also you mentioned once that you want to do a negative role. How long do we have to wait for that? I think I'm waiting for the right script. Seriously, it really doesn't Even matter. we are, believe me, we are. Let's see, let's hope for the best, because you're always looking for scripts which are different, and it'll be very myopic to just think about my character. I always think about the script. So that's the major part. The script has to connect to people, irrespective. You don't have to be a North Indian again and again, but the script has to be good. I'll get a chance again. Of course, there are certain after 2-3 films, I get an opportunity like Action Hero or Article 15 or The Make, which are different from my normal core of films that I choose. So it depends on the opportunity. Waiting with open arms. Thank you, Ayushman, for raising the bar and really breaking the glass ceiling with her very high quality content. Whether it was Dr. G, which we thoroughly enjoyed, and this one seems an out and out entertainer. So you're constantly pushing the bar, and that's really nice. And congratulations to you, Mr. Ajay Bijli, for staying relevant in the last 3 decades. My question to you is very specifically on how have consumer preferences changed
in the last 30 years? Because as you rightly said, you started your journey way back in 1990. From then till now, how have consumer preferences moved? Number one. And number two, Priya Complex has always been, as a true blue Delhiite, I know that this was the destination, the place to be in ever since we've been in college and thereafter. But how are you reinventing, or what are you doing with this mixed-use development space? I hear some plans of renovation. So please throw some light on that. Thank you. I'm going to try to be as short as possible. I mean, India is a market which I've really enjoyed for making cinemas. I think I've never ventured out. The only cinema that we've done outside of India is Sri Lanka. And the reason why I always love this market is because it's all a quantitative market. You get about 1,800 films going through the system, and you have about 1.4 billion tickets that get sold. So over the years, one thing has always remained consistent is the relentless sort of determination and commitment of the film fraternity to keep on making movies which connect with the consumers, and on the other side, the consumer's appetite, insatiable appetite, to go out and entertain themselves, doesn't matter what is happening at home. So, ye cheez, entire 30 years of my journey has remained consistent. And so nothing has changed. All we have to do is, as I said earlier, keep pushing the envelope. Whether it's filmmakers, they have to keep on pushing the envelope. We have to, as exhibitors, have to make sure we keep pushing the envelope. And as you used the correct word, relevant, we remain relevant in terms of our experience. The filmmakers have to remain relevant with the stories they tell. And then the consumer, who's the ultimate, who gives the ultimate verdict on anything, whether it's a film or a cinema, only then he gets satisfied. And this has always remained consistent over the years. The avatars have changed. Celluloid se analog bana, analog se xenon bana, ab xenon se laser ho gaya. So avatar change hota gaya. But otherwise, वही projection में मैं वहाँ पर पीछे porthole बनकर और यही screen है. बस की quality improve होती है. And that's it really. So it's fantastic to be in this market is just amazing. I have no idea. We have to come out with more ideas then. So sweet. Yeah. What's your name? नहीं भी होगा तो Royal Cup. Royal Cup. That's a royal name. You look royal. Happy birthday, Royal Cup. Can we do this? Okay. So sweet. Got it? Yeah. Thank you so much. मेरा भी है मेरा भी तू तो बर्थडे सर्टिफिकेट दिखा सॉरी टीवीआर के शेयर कब तक लगता है आपको कि बढ़ेंगे प्रॉफिट कब तक बढ़ेंगे मैं एक्चुअली शेयर ज़्यादा देखता नहीं. मैं सिर्फ ट्राई करता हूँ कि अच्छा एक्सपीरियंस दें और क्वालिटी सिनेमास बनाएं और फिर ऑटोमेटिकली they always say numbers follow a good product and a good service. So numbers will follow. There's no question about the fact that 18 months we were like completely flat out. We were knocked out. So कोई आदमी बिल्कुल ही अगर knock out हो जाए कोई भी business, it takes time to recover. And we are still in the process of recovery. So only been 14 months since we've been open. But every month, every quarter, I'm seeing improvement. मेरा मूड नहीं ये महफिल वैसे ड्रीम गर्ल 2 की है नंबर्स के बारे में बात आई कैन इजीली टॉक अबाउट नंबर्स वेरी इजीली Q4 Q1 बट आई थिंक अभी इतना ही बताता हूँ कि पिछले क्वार्टर से जो प्रीसीडिंग क्वार्टर था Q4 of FY 22-23 has been remarkably improved. This quarter, which is started with Oppenheimer, Barbie, Rocky Rani, and now Jailer got released today. Tomorrow, Oh My God 2 and Gadar 2 has got released. It's just phenomenal. So as जो मैं पहले कह रहा था, the appetite for people to watch movies 18 months cannot change it. 18 months definitely एक interval था, लेकिन picture अलग नहीं हुई थी basically. It's a dialogue of the movie. You'll help me with that. So I think things are only going to get better from here on. We will take last 2 questions. Only last 2 questions, please. CNBC, I'm already shaking. So we just need to know how your partnership with the IMAX, how it's going to grow further.
Just let us know. मैं तो मेंशन सवाल कर क्या करें Just ये to न्यूज़ I mean, 18 this is का the हाल है 20th IMAX, and we are rolling out two more very shortly. One in Eros in Bombay, which is a very iconic South Bombay ka cinema. There we are opening, and we're also opening in another cinema in Delhi called Paras. Then we have two 14-screen complexes coming up, one in Pune, one in Bangalore, and there again we have IMAX. So at least 4 to 6 IMAXs we're opening this year. But IMAX exhibition screens are joined at the hip, so to speak, with the content industry. So the more movies get made on IMAX, the more IMAXs we can have. Luckily, Hollywood is making about 12 to 14 movies. This year itself, about 4 to 6 films that I know of at least. Jawan is coming, Salar is coming. I believe advanced negotiations are going on, talks are going on for Tiger 3. Then there is Ritik's movie Fighter that's coming. So quite a few films are coming on IMAX. And down south, lots of movies are coming on IMAX. Well, each IMAX costs, I think this is cost about 8 crores. So you can do the math. If you do 10, it's about 80 or 200. Ayushman, since we are here I request everyone to please ask questions one at a time. Last question, please. Ayushman, since we are here for Dil Ka Telephone launch, I want to know how are the two songs from the first film and the second film different as far as the music and the tempo and the visualization is concerned? Of course, the core is the same, and it's done by Meek Brothers. The choreography is different. It's a little scaled up. Like there's a trap part in the song, and there are more beats. That's about it. The lyrics are different, apart from the hook. Yeah. Hi Ayushman. Hi. I just wanted to ask you a question about, the fact that you reversed the gender role, to play this role. It's almost like a trial by fire for like all actors. And you mentioned Robin Williams, Mrs. Doubtfire. So who were your inspirations like when you took this role, and whose skin did you get in, and did you follow some specific method? Okay, for Indian markets, I think Govinda was a pioneer in comedy. So this is like a tribute to Govinda kind of films of the 90s. It will remind you of that. And two great actors, Govinda sir and Kamala Hassan sir. I think they were brilliant in Chachi 420 and Auntie Number 1 respectively. So these are the two actors I really look up to, and for this film they was inspiration. Thank you everyone. We would request the guests to just be on stage for a few minutes for group photograph. There's one more question I think. Rajesh ji पूछेंगे रहे. Yeah. We'll take these last two questions. इसको रिकॉर्ड करो. आपने फीमेल का रोल किया है. एक सेकंड उनको माइक दे दीजिए. There's mic here already, Jignesh. Go for it. Yeah, thank you so much, Ayushman. I have a question for Ajay sir. So, do you think the expansion of a premium experiential format in India will drive audience to the theatre? Actually, it is a very disparate market. So you have a customer at every price point. We just declared our results, and an average ticket price of PVR across the circuit was 249 rupees. We have 100 rupees customer, and we also have 1500 rupee customer. Our objective is to have every single person out of his house and come to see. Whether you're somebody who lives in a farmhouse and you've got a big, home theater at home and you're price insensitive, or you are somebody who's price sensitive and therefore you just want a great experience, but you don't want to pay more than 100 rupees. So I think IMAX is so as I said, it's very heterogeneous market, very disparate market. IMAX is really for that movie buff who really doesn't want to compromise on his movie. I know my own daughter, she didn't see Oppenheimer for 10 days because she couldn't go and watch it on IMAX, and she saw it there. So I think that consumer is also in India. It's like completely movie buff, completely movie mad, doesn't want to compromise. So ये उसके लिए. तो हर चीज़ हर आदमी के लिए नहीं है. पर हम try कर रहे हैं, as they say, horses for courses. For every single segment of the market, we have a enhanced movie going experience, a solution. Thank you so much. अजय जी, इधर एक सवाल. प्रदीप चल रहा था. मुझे हालांकि खुशी है कि आपका जो ये पीवीआर, पहले से मैं इस पर फिल्में देखता हूँ जो पीवीआर होता था, दुगंधा का सिकंदर और ये सब, और जब आपने पहली बार ये पीवीआर बनाया, उसकी प्रेस रिलीज आज भी मेरे पास है, उसको प्रेस भी मैं था. हालांकि मैं आपको उससे भी पहले से जानता हूँ, आपके घर के पास रहता था, आपके पिताजी को देखने जाता था, खासतौर से, और आप बैडमिंटन खेल रहे होते थे. आज इसको देखकर आपकी रूप पुराने दिन मुझे याद आ रहे हैं.
तो आपने जो तरक्की की है, जो जिस तरह इसको सिनेमा को नया कैनवास दिया है बहुत बड़ा, कभी सोचा नहीं जा सकता था जो आपने किया। थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये जाना कि आपने ये किया है, तो आप और क्या टेक्निक देख रहे हैं, जो आप नई नई टेक्निक हम देखते जा रहे हैं, इतना बड़ा स्किल होता जा रहा है, 60 में 35 में 70 में, और ये सब इतनी चीजें आती जा रही हैं दिन पर दिन, नए नए साउंड सिस्टम। अभी आप क्या फीचर क्या देख रहे हैं और क्या क्या टेक्निक हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में? एक्चुअली हमने एक और अभी सिनेमा यहीं पर DLF प्रोमेनाड में खोला है, जिसका नाम है आइस। सो आइस के अंदर अगेन फिल्म मेकर्स जो सामने पर्दा है उसके लिए मूवी नहीं बना रहे, साइड पैनल्स के लिए भी बना रहे हैं, तो वो बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो भी। और तो इस तरीके से एक और हमारे पास टेक्नोलॉजी उसका नाम है ScreenX। उसके अंदर अगर जैसे एक्शन सीक्वेंस है, कोई कार चेज और एनी फाइटिंग सीन, not only again on the big screen you see, the screen is around pointing there for some reason. Again on the side panels, it again opens up. Not the whole panels, on the side panels. So that's called ScreenX. So इसी तरीके से जो मैंने पहले भी कहा था कि हर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, Dolby, Christie, Barco, everybody, seating, they're all improving. I've just got to know there are some seats इसके अंदर मसाजर्स भी आ गए हैं। अच्छा। तो कुछ ना कुछ इस ब्लैक बॉक्स में वो कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और वो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो लाते रहे इंडिया में और दिखाते रहे, बिकॉज उसी तरीके से एक एनहांस होता रहेगा। बट एज आई सेड अर्लियर कि माय व्हाटएवर आई डू इज इनकम्प्लीट till people like Ayushman continue to keep making movies, because nobody's going to come to a cinema which has just got technology. They'll only come, so we have a symbiotic relationship with content. तो movies और cinema जब बिल्कुल ही परफेक्ट मैजिक तभी आता है जब दोनों चीजें लोगों को पसंद आए, पिक्चर भी पसंद आए, एक्सपीरियंस भी पसंद आए, और जब तक एंड क्रेडिट्स खत्म नहीं होते बैठे रहे, मजा आ गया पिक्चर देख के, तो वो तभी हम कर सकते हैं। तो अभी कुछ मैं और अपना कर रहा हूँ। अच्छा, और आयुष्मान अपना कर रहा है। अभी कुछ मैं आयुष से सवाल पूछूं, एक आपसे कितनी प्रॉपर्टी आपकी कुछ और इंक्रीज होने वाली है स्क्रीन या प्रॉपर्टी? अभी with the grace of God we have 1708 screens I think. Okay. And 335 properties. I think we are growing by about 200 odd screens every year. Yeah. So अभी at any given time 300 odd screens are under fit out. आयुष्मान, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा चलते चलते, आपकी भी 10 साल की जर्नी, 11 साल की जर्नी बहुत ही रिमार्केबल है और बहुत आपने डिफरेंट रोल किए। क्या आप कुछ चाहते हैं, कोई ऐसा रोल आपके दिमाग में जो आप करना चाहते हो, कुछ ऐसे 1 या 2 रोल जिसके लिए आप तरस रहे हो कि काश मुझे ऐसा रोल मिले? मैं रोल से ज्यादा स्क्रिप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मिले, सब्जेक्ट में स्क्रिप्ट मिले जो किसी ने पहले नहीं अटेम्प्ट की हो, शुड बी द फर्स्ट अटेम्प्ट इन हिंदी सिनेमा एटलीस्ट, तो मुझे वो ज्यादा एक्साइट करती है। मैं हमेशा कहानी को पहले देखता हूँ, खुद को बाद में देखता हूँ। पर हाँ, नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ, एक्शन रोल करना चाहता था, एक्शन हीरो में हुआ, आगे भी करना चाहूंगा। और मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि शाहरुख सर की कभी ना एक फिल्म आई थी, आई थिंक दैट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो 90s में एक बहुत ही अलग टेक्सचर की फिल्म आई थी जो स्लाइस ऑफ लाइफ थी, इट वाज वेरी क्यूट, एंड आई थिंक उस तरह की फिल्म भी करना चाहूंगा। सो हर तरह का रोल करना चाहूंगा।